राधे राधे आप सभी को कृष्णा अर्पण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब सेक्शन 45 से रिलेटेड प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एन एक्सपर्ट अंडर एविडेंस एक्ट इज अ पर्सन हु स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। सेकंड, एक्सपर्ट इन डिटेक्टिंग लाइज। थर्ड, हैविंग रिक्वायर्ड स्किल्स ऑन अ मैटर अपॉन विच ही इज गिविंग ओपिनियन। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है? आंसर इज सी। नेक्स्ट, the opinion of expert is not relevant on point of Indian law, on point of foreign law, on matters of science, on handwriting or finger impression. The answer is on a point of Indian law. Next, under which section of Indian Evidence Act the expert opinion is relevant? 45, 44, 46 और 41. तो आंसर क्या है जी? आंसर इज बी, section 45. Next, which of the following is not a correct statement about expert opinion? A, the opinion of an expert is seldom conclusive. B, facts which are irrelevant become relevant when they support the opinion of experts. C, expert opinion is binding on the judge always. D, evidence of expert is suggestive piece of evidence. तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज सी, expert opinion is binding on the judge always. This is not a correct statement about expert opinion. Next, which of the following statement is not correct? The court takes the assistance of expert when it has to form an opinion on point of foreign law, identity of handwriting, identity of finger impression, or point of Indian law. The answer is point of Indian law. Next, the following is not the exception of the rule of hearsay: dying declaration, res gestae, confession और medical expert opinion. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज सी, medical expert opinion. Next, who amongst the following is an expert under Indian Evidence Act? Handwriting expert, fingerprint expert, ballistic expert, all of the above. तो आंसर इज डी, all of the above. Next, in which section of Indian Evidence Act opinion of third person is relevant? Section 14, section 34, section 44 और section 45. The answer is section 45. Which one among the following does not fall into the category of expert evidence? A, opinion relating to bullet by a ballistic expert. B, opinion relating to forgery by a handwriting expert. C, opinion by narco-analyst about the condition of mind. Or D, opinion by a serologist about blood. तो क्या है इसका आंसर? आंसर इज सी, opinion by narco-analyst about the condition of mind is not fall into the category of expert evidence. Next, opinion of an expert under section 45 of Indian Evidence Act is conclusive proof, not a conclusive proof, supportive and corroborative in nature, is not admissible. तो क्या है इसका आंसर? आंसर इज सपोर्टिव एंड corroborative in nature, C. Next, opinion of handwriting expert always needs corroboration, is inadmissible in evidence, is always binding on the courts, can be acted upon without corroboration. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज डी, can be acted upon without corroboration. Next, under which section of Indian Evidence Act DNA test can be admitted in evidence? 47, 45, 48 or 49. Answer is B, section 45. Under which section of Indian Evidence Act an opinion of expert is relevant? तो आंसर क्या है इसका? Section 45. Next, under the provision of section 45 of Indian Evidence Act, the opinion of an expert can be for identity of finger impression, identity of handwriting, both A and B, or neither A nor B. तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज सी, both A and B. Next, even a student may be treated as expert under section 45 of Indian Evidence Act
इट वॉज लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन, किस केस में कहा गया था? केस का नाम बता देता हूं मैं, कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता एंड अदर्स. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 45, which of the following have not been mentioned as point on which opinion of expert is relevant? Which of the following have not been? A, point of foreign law, B, point of art, C, point of domestic law, और D, point of science. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज C, point of domestic law. Domestic means Indian law. Next, opinion of an expert under section 45 of Evidence Act is a conclusive proof, is not a conclusive proof, is not relevant, is not admissible. तो क्या है इसका आंसर? आंसर इज B, is not conclusive proof. Next, an expert is competent to testify on which of the following? A, matters of science, B, questions of art, C, foreign law, और D, all of the above. तो क्या है इसका आंसर? आंसर इज D, all of the above. Next, opinion of expert are not relevant. इसको आप खुद से करके बताइए. Next, when the court has to form an opinion as to electronic signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued the electronic signature certificate is fact in issue, relevant fact, proof fact, or none of the above. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज relevant fact. Mark the incorrect statement. A court may take the assistance of expert for forming opinion on point of foreign law, art, both A and B, neither A nor B. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज D, neither A nor B. Why? Because question क्या है? Mark the incorrect statement. Not correct statement, but incorrect statement. Next, a disputed handwriting can be proved by calling an expert, examining a person acquainted with the handwriting of the writer of the questioned document, comparison of the two admitted and disputed document, or all of the above. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज all of the above. Next question. Opinion of expert are relevant under which of the following section of Indian Evidence Act? Section 45. Next, relevancy of expert evidence for the purpose of Evidence Act is contained in section 10 से 20, 45 से 48, 35 से 40 और 59 से 60. तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज C, section 45 to 48. Next question. A person suffering from any mental disorder can be exempted from criminal liability ipso facto, cannot be exempted at all, can be exempted from such liability at the discretion of court, can be exempted from such liability on proof by expert evidence of this effect. तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, एक बार जोर डालिए अपने दिमाग पर. चलिए, तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज D. Next question, opinion of an expert is relevant under section 45. Next, following is not the exception to the rule of hearsay: dying declaration, res gestae, medical expert opinion or confession. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज C. Next, expert opinion is relevant under section 45 when it is given upon a point of foreign law, custom, relationship or digital signature. तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज A, foreign law. Next, expert opinion is relevant under section dash of Indian Evidence Act. तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the provision under Indian Evidence Act that deals with relevancy of opinion of expert? 49 and 50, 45 and 46, 23 and 24, 81 and 82. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज C, 45 and 46. The opinion of examiner of electronic evidence is relevant fact under 45A, 47A, 65A और 65B.
तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज ए, 45A. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 इज conclusive proof, not a conclusive proof, supportive and corroborative in nature, none of these. आंसर करिए, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब हम सेक्शन 46 से रिलेटेड पीटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, द रेस्ट इंटर आलिया एक्ट इज रिसीवेबल अंडर सेक्शन 48, अंडर सेक्शन 47, अंडर सेक्शन 46 और अंडर सेक्शन 45. तो आंसर क्या है इसका? अंडर सेक्शन 46 of Indian Evidence Act. Next question, facts supporting or rebutting the opinion of experts are relevant under section 45, section 46, section 50 or section 51. Answer is section 46 of Indian Evidence Act. अब चलिए सेक्शन 45 से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम. नंबर 1, व्हाट इज एक्सपर्ट ओपिनियन? एक्सप्लेन द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर स्टेट के एग्जाम में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एविडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट वुड बी एडमिसिबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड एन ऑर्डिनरी विटनेस? डिस्कस फुली एंड इलस्ट्रेट योर आंसर. विल द फॉलोइंग एक्सपर्ट एविडेंस कैन बी एडमिटेड? इफ सो, गिव रीजंस एंड साइट रेलेवेंट केसेस. नंबर 1, एविडेंस ऑफ एन आर्किटेक्ट एज टू द डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय न्यूजेंस. सेकेंड, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो बताइए इसका आंसर. तो ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन. आपको इन क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.